I suffer from dyslexia. My daughter has special education needs. I will be visiting special schools. I will be visiting these special children that go to these schools, and I will be the voice for them. काउंसलर जफर इकबाल बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम के 115वें लॉर्ड मेयर मुंतखब। वो शहर की तारीख के छठे पाकिस्तानी निजात मुसलमान लॉर्ड मेयर हैं। डिस्लेक्सिया के शिकार होने के बायस रवायती तालीम से नाबल्द जफर इकबाल सियासी और समाजी मैदान में एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। I never went to university. I don't learn things like that. I never learned anything in the classroom. I learn it different way. I'm dyslexic. I think differently. I do things differently. So I educate myself differently. I started reading by reading comics in the 70s, and I love football. So, there was a comic called The Tiger. It was about football. Although I couldn't read it, but I could follow the story on the pages, and then I would know what the words are. So, I think a bit differently because I'm dyslexic. I think in pictures. I do things instead of, I don't speak about things. I try to do things. And when I do things, I learn from them. That's the way I learn. कौंसिल चैम्बर में मुनकदा हल्फ बर्दारी की रवायती तकरीब में उनको लॉर्ड मेयर का मखसूस लिबास और चैन पहनाई गई। एलिया लेडी मेयर्स फारूक अख्तर के हमरा चैम्बर आमद के बाद पहले कौंसिल सेशन का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। जियो न्यूज से गुफ्तगू में उनका कहना था कि रोजमर्रा जिंदगी में वो पैदल चलने या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं। लॉर्ड मेयर बनने के बाद मेयर की गाड़ी में बैठना और मखसूस चैन पहनना उनके लिए एक बड़ी तब्दीली है। I love walking. That's one of the best, things I do is I walk every day. Everybody knows in the chamber that I travel by Westmoreland Transport. I believe in the principle that public transport should be for the public, and we should have the best public transport in the city for the public. And because I'm a community guy, I live locally, and the best thing that ever happens to me is when I get on the bus and somebody will shout "Councillor," and I'll go and sit with them, and they tell me how the day was. What the problems are. 70 की दहाई में जब बरतानिया आए तो उम्र सिर्फ 12 साल थी और लर्निंग डिफिकल्टीज का शिकार होने के बावजूद गैर रवायती तरीकों से न सिर्फ तालीम मुकम्मल की बल्कि खुसूसी बच्चों की तालीम के फ़रोग के लिए खिदमात के बायस आन जहानी मलका बरतानिया से MBE का अवार्ड भी वसूल किया। That was really a big honor for me getting the MBE. When I was at school, I didn't get the help I needed. I didn't get the support. I left school at 16 without even been able to read and write or speak English. So, when I left school, I had no qualifications, I had nothing. But, to this day, I have never been unemployed. I have never been unemployed since I came to England in 1970. Yeah. जफर इकबाल को फख्र है कि इस शहर ने उन्हें सब कुछ दिया। उनका मानना है कि नौजवान नस्ल के पास अनगिनत मौके हैं कि ज़िंदगी के हर मैदान में अपनी खिदमात से इस कसीरुल सकाफती शहर की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकें। I think it's a multicultural city. It's a beautiful city. We got all sorts of people living here, rich in culture, and we should respect each other, and we should respect all cultures, and we should move forward as one. We all Brummies, and this is Birmingham. साइमा हारून, जियो न्यूज़, बर्मिंघम।